order was passed by them or not? Yes, sir. After providing opportunity of hearing to you. Sir, पेज 12 पर इसका कंप्लीट आंसर खुद इलेक्शन कमीशन ने पहले ये बता दीजिए, उन्होंने राइटिंग में दिया आपको? बिल्कुल किया। अच्छा, बिल्कुल किया। अब पेज 12 पर मुलाजा कीजिए इलेक्शन कमीशन उसको कैसे कर रही है। What did you file? I filed my application concerning, और जरा original petition पर देख लीजिएगा पेज 20 पे। No, this is your application. Order है ना? What is your complaint? This is the order of the Provincial Election Commission Punjab. जी सर। आपको कहाँ पेश होना था? पेज 23 सर देख लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होना था, पेश हुए या पंजाब में पेश होना था? पेश हुए नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पे उन्होंने डिसिपेट किया आगे नीचे सारों को। अब जरा पेज 20 पर देख लीजिएगा ओरिजिनल पिटीशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 47 है, ये मैंने एप्लीकेशन जाके वहां दी विद दी प्रेयर्स। पेज 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 47, पेज 23। अब पेज 23 पर जो चीजें मांगी, सारी पिटीशन तो लंबी है, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूं जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्रेयर में। पेज 23 की प्रेयर, ये मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर। In the light of foregoing, it is prayed that the ECP pass appropriate orders to ensure that candidates of the applicant PTI, including those presently in detention, or who may be detained in future, or those who have been proclaimed offenders / absconders, are allowed to file their nomination papers for the general elections and attend to the scrutiny process, including the appeals against their candidature. Because I want to ask a question to you, because this is a contempt proceeding. This is nothing new petition. The original petition was disposed of by this court on 22nd December 2023. Exactly. And para 4 contains the direction that you appear before the election commission and they will try to resolve your all complaints. But in this contempt petition, if you will see the title of the petition, you have made so many contemners in this. Besides election commission, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज बहुत सारे कंटेम्नर बने हुए हैं, आईजी के पंजाब के बने हुए हैं, तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो कंटेम्प्ट की है इलेक्शन कमीशन ने, वो थोड़ा सा बताइए ना, उनका कंटेम्प्चर सेट क्या है अगेंस्ट विच यू हैव कम हियर? तो उन्होंने जो एनफोर्स करवाना, that is why I was asking to you कि whether they have passed any order or not, on after providing opportunity of hearing to you whether any order was passed, any directions was given to the provincial election commissions. हमें कुछ नहीं दिया जी। हाँ, ये हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जो पेज 12 में पढ़ रहा था, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो यानी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स उसको किस तरह से डील कर रहे हैं, हमारी जो कंप्लेंट्स आई। तो वो कंटेम्प्ट, इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मेन पार्टी जो आपके पास कंटेम्प्ट में है। मैं उसे पहले देख तो लीजिए ना। आफ्ताब अकबर दुरानी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कंटेम्नर नंबर 1। उमर हामिद खान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, कंटेम्नर नंबर 2। नदीम अहमद चौधरी, चीफ सेक्रेटरी KPK, कंटेम्नर नंबर 3। जाहिद अख्तर जमान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब। मोहम्मद फखरे आलम इरफान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कराची सिंध। शकील खादिर, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान। डॉक्टर उस्मान अनवर, IG पंजाब। डॉक्टर खालिक शाह, IG बलूचिस्तान। अख्तर हयात, IG police KPK। रिफत मुख्तार, IG police Sindh. Just to my consumption, because the contempt proceeding is before us. The contemner, the person who has violated the order of this court. So we have to first see who has violated the order of this court. सर, ये आपने इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ 3 में लिखा कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। पैरा 3 में तो देखे ना, आर्टिकल 218 है, आपने उस पे लौट किया, और this is their responsibility to conduct the fair and transparent election. Exactly. And all authorities हैं वो पैरा 4 में है। मुझे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा केस। What do you want from us? सर, अगर आप चाहते हैं मैं आपको CD प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में। अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें। This is a constitutional court. मैं इसीलिए Everybody comes and makes a political statement here. Please tell us, you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. Yes.
Now you have moved a contempt application against IG and chief secretaries who have got nothing to do with the election commission. Election commission is a separate constitutional body. I hope I don't have to tell this to such senior counsel. You've not arrayed even the election commission of Pakistan as a respondent, or the individuals. Contempt is committed by individuals. What has the IG police got to do with it? What has got a chief secretary got to do with it? The matter of election pertains to election commission of Pakistan. Yes, and Election Commission of Pakistan is in charge of fair and free elections. What the Chief Election Commissioner has done, or the Election Commission has done, they passed on your Lordship's order to all concerned. Now, when I have moved applications and complaints where my proposers, seconders, candidates, their agents were obstructed and they were incarcerated and they were not allowed to cast their nomination papers before the returning officers, and or on the scrutiny day, the way they were roughed up and they were not allowed, the way the applications have been rejected. And where is the proof of any of this? I have given all that. Where is it? These are just words that you are uttering from the rostrum. Show us some proof. Yes, the CD is here, and I CD is there. मैंने CM में जो वन मूव की है, मैंने उसमें सारों के नाम दिए हैं जिनको ने रिजेक्ट किया, जो इन्होंने I don't know why we are doing this. Yes, why we are doing this? Can you please hear us and just hear the question and answer the question? Sir. You have invoked the jurisdiction of this court under Article 204 of the Constitution, Yes, which is contempt of an order of this court. Yes. So I don't want a yes from you, just hear us out. My learned brother has said that what order has the Election Commission of Pakistan violated? This court facilitated whatever you wanted, that you will go at 3 p.m. to the Election Commission and put all your grievances there. Now you are saying that the IG police and chief secretary have violated the order. They've got nothing to do with the election. If the order has been violated, it would be by the Election Commission of Pakistan. How does the IG of police and the chief secretary come into the picture? Either you file a different petition, this is a contempt matter, you obtain an order against ECP, you file contempt application against somebody who has got nothing to do with the election. If we issue them notice, they'll say we got nothing to do with the election. This is a matter of Election Commission of Pakistan. Why are you sending us notice? Can you please answer this legal question as opposed to referring to some CD or something like that? Answer the question. You want contempt action taken against individuals. Why? May I answer that? Ji, please do so. My lord, your lordship's order was not just a ceremonial order to the Election Commission of Pakistan, reminding the Election Commission of its constitutional obligations and reminding how important a fair and free and a transparent election is, how the confidence of the people of Pakistan has to be conferred. It was not a mere ritual. Your lordship sent it to the Election Commission of Pakistan. It was meant to be enforced as such. And what was the enforcement which is provided under section 184, 185, 186, 187 of the Electoral Act of 2017. They have to ensure that Who is they? The Election Commission. Exactly, that's a very question. Election Commission. That's a very question I posed to you, which you have not answered. Please just wait. You are seeking a contempt action against the IGs of the provinces and the chief secretaries. यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे सुन लीजिएगा. आपको फिर मैं अपना अगर मफहूम न समझ. मगर आगे इलेक्शन प्रोग्राम किस पेज पे आपने लगाया है वो दिखाएं. Without disturbing the timelines and election Constitution petition में लगाया है सर. वो तो अलग है ना, वो तो आपकी 47 के अंदर. 47 इतना है. भाई अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया उसकी अपील फाइल कर दें. पेज 25 बात है. जी सर. अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है उसकी अपील फाइल कर दें. जरा ये भी सुन लीजिएगा.
सैकड़ों पिटिशंस ऑल ओवर द कंट्री हुए हैं, नकल भी नहीं दे रहे हैं। नकल के लिए सैकड़ों किस पिटिशंस चीज की नकल नहीं दे रहे हैं? वो जो रिजेक्ट किए हैं नॉमिनेशन पे। आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं? सर एक्सेप्ट कितने हुए हैं? हाँ जी, एक्सेप्ट ये जो रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं, रिजेक्ट नहीं, पहले एक्सेप्टेंस का बताइए ना, कितने पूरे पाकिस्तान में एनए और प्रोविंशियल मिला के? सर ये जो है वो एनए और पीएस जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है। 668 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट? ये मैंने जो CM1 ऑफ 2024 है और मैंने CD लगाई है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके आप से आपकी जो ये नहीं, पहले मैं ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आप बेशक आर्गुमेंट कीजिए। ये जो आपने लिस्ट भी लगाई है ना सर, ये है टोटल 668 फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हुए। जी रिजेक्ट। अब इसकी जो सोर्स आपके पास आप बता रहे हैं ना, वो सोर्स जो है लास्ट पेज पे लिखी हुई है। आपका पेज जो है 20 पे देखिए सर। The data has been gathered through monitoring of various social media platforms. Yes, sir. ये भी कंफर्म नहीं है आपको कि 668 आपके पार्टी के लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, और पार्टी को अगर ये नहीं पता है कि कितने रिजेक्शन है, और सारा जो डाटा गैदर हुआ है वो हुआ है थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी आपको ये पता है कि 668 कंफर्म है? आप जी सर कंफर्म। तो ये अखबारों में भी तो नहीं है, मेरे पास भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये होगा ना कि जो मीडिया पे आपने सुना है कि फलाना कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो आपने इसमें डाल दिया है। ऐसे सारे कंप्लेंट्स जो है पार्टी के और नाम भी इसमें नहीं है। ये देखिए, ये एक जगह तो बड़ी अजीब बात लिखी हुई है इसके अंदर, पेज 9 ऑफ द लिस्ट के ऊपर उनके नाम नहीं है। और जिसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है, सर ये जरा बात तो सुन लीजिए ना, जिसका पेपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है वो अपील कर देगा, खत्म। अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रेटें करना पड़ रही हैं। नकल सर ब्लॉक किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। पेज 9, अब पेज 9 देखिए, पंजाब असेंबली है, ये आपकी CM1 के अंदर है। जी सर। अब ये हाल है कि पंजाब असेंबली के अंदर 273 पे बंदे का नाम नहीं है। मेजर फैमिली, मेजर फैमिली, मेजर फैमिली। अब ये कौन मेजर फैमिली है भाई? बंदे का नाम ही नहीं। असेंबली से क्या मुराद है? मतलब मेजर साहब को इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेजर ताहिर सादे के ये बता रहे हैं। भाई तो नाम होना चाहिए ना, मेजर फैमिली। आप क्या दिखा रहे हैं? मेजर है तो भाई ये होगा मेजर। ओमिशन है, आप ठीक है, नाम ओमिशन है, लेकिन मेजर सादिक ताहिर ये बता रहे हैं। So you are saying that we should do the job of the election commission? Yes, sir. We should, sir, please, let's please, this is a court of law. ठीक। I mean, if this is to, I don't know what, I don't understand. If someone's nomination paper has been rejected, En masse of one political party. can we get the media to put mics here so you can address them? Can we conduct this as a court of law, please? I already listened. Can we conduct them as a court of law, please? I am before the court. No, let's then give us this much respect. If every second statement of yours will be a political statement, Sir, then please. fine. I'm asking a simple legal question. Please Let me complete the question Yes. so you can answer it nicely. There is an election program has been issued. Papers are rejected, papers are accepted. Someone is happy, someone is not happy. Each high court has nominated an election tribunal. You file a rejection thing there. Assume that what you are saying is correct. They're not giving you the order. You file a petition without the order. Say they have not given us the order. ये तो आप ऐसी, don't be so helpless that, oh, they're not giving us order. There is nothing on record. If you saying that we should allow all these appeals without hearing the other side who may have objected to, we don't know what the nature of the objection is. Someone can be a lone defaulter, someone can be, maybe it was wrongly rejected. We don't know all these facts. We have to see every case individually. We cannot say, okay, do not reject the nomination papers of this political party and allow them of that political party. How can we do this?
either you go in contempt or you go, I don't know what sort of petition have you brought before us. It's a contempt matter, and rather than arraying the Election Commission of Pakistan, you've arrayed IG. Well, IG has got nothing to do with the election. It's the Election Commission of Pakistan. I mean, I don't think we need to teach that in the Supreme Court of article. Isme padhne aayin mein, where does this IG police feature in it? Where does the Chief Secretary feature in it? I mean, if you just want some newspaper headlines, fine, you'll get the newspaper headline, but please tell us the law. Does the election held, is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? Is it held by the chief secretaries of the provinces? There's a whole constitutional body set up which says the Election Commission of Pakistan. Now, yes, you may have a grievance against the Election Commission of Pakistan, and the law provides for remedies. And those remedies, if the papers have been rejected wrongly, please approach. It's not the Election Commission you'll be approaching the High Court, the Election Tribunal. My paper has been wrongly rejected. Okay, there's no order, right? You'll say they're not giving me the order. You think the Higher Court is so helpless, they cannot call for it. Why have you rejected their nomination paper? I mean, यहाँ करके ये CD हो गई और ये हो गया वगैरह हो गया. Let us get. We are trying to push through democracy, but every day we come across people not wanting to go into election. But you are standing behind every political party for election. We have repeatedly said so. And you are bringing here IG पुलिस को, चले हम उसको नोटिस कर देते हैं. IG आज कर देंगे नोटिस, कंटेम्प्ट, उसके खिलाफ हम चार्ज फ्रेम करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा. क्या करें, ऑर्डर हमें बता दें, ये ऑर्डर कर दें, आज हम कर देते हैं आपके लिए ऑर्डर. हाँ, खुले हुए दरवाजे, अभी भी टाइम है. Why you wasting time? Go and file appeals against your rejection of nomination papers. Each case will be decided on its own merits. कोई वो अलाउ करेंगे, शायद कोई डिसमिस करें, I don't know. फिर आप शायद हमारे पास आ जाएं, फिर हम उसको देख लेंगे. राइट ऑफ हियरिंग दी है इनको, नहीं दी है इलेक्शन कमीशन ने. आप अगर सुनना पसंद करेंगे, मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए. अच्छा, अब सर ये बातें ना करें ना, तो मुझे जरा सुन लीजिएगा. अभी क्या कर रहे हैं हम आपको, आप हमारे सवाल के जवाब भी तो यही पूछ रहे हैं. आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं, एक मिनट. राइट ऑफ हियरिंग जो उस दिन 3 बजे था, वो आप बताए ना, इलेक्शन कमीशन वालों ने सुना है इनको. ECP को बुला लेना जरा, एक मिनट, पता तो चले ना कि जरा पेज 12 पर रुक जाइए सर. कंप्लायंस के तक सर ये आए थे 3 बजे आपके पास, पर हमने रिपोर्ट भी कंप्लायंस सबमिट की. नहीं आए थे, हियरिंग हुई थी. बिल्कुल सर, वी हैव सबमिटेड. आए थे, मीटिंग हुई, इंस्ट्रक्शंस हुई, डायरेक्शंस हुई टू ऑल द रिलेवेंट क्वार्टर्स, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड सर. इनके ये जो रिजेक्शन के अलावा इनके एक्सेप्टेंस का आपको पता है कितने हुए हैं सर? ये अभी डेटा है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का नहीं, टोटल का है सर. लेकिन ये अभी तो दैट विल बी डिसाइडेड बिकॉज द पार्टी पोजीशन विल बिकम क्लियर आफ्टर ऑन 13th of January when form 32 is drawn. इन्होंने 13 जनवरी को क्या होगा? सैंपल अलॉटमेंट होगी तो इट विल. ये रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की अपील का तारीख कब तक है? आज आखिरी, आज आखिरी 10 तारीख तक. आज आखिरी है कि दायरगी की, और 10 तक फैसले करने हैं. 10 तक फैसले करने, आज आखिरी है दायरगी की. तो सुन तो लें जी. 3 तारीख, today was the last date for filing nomination papers, appeals, and 10th of January is the last date for deciding the appeal. तो अभी वक्त है. आज So why you here in the Supreme Court? You should go and file appeals before the tribunals. कुछ अपीलें फाइल Why कर you दी हैं losing your right of appeal? रिजेक्शन ऑर्डर के लिए सारी रिटर्न हाई कोर्ट्स में जरा देख लीजिएगा कि फ्लड ऑफ रिट्स पिटीशन फाइल हुई. सर एक चीज मैं अर्ज करूं, जरा पेज 12 पढ़ लीजिएगा. आपका ऑर्डर था कि स्मूथ और फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंसी में. हम क्या चाह रहे हैं, हम भी तो चाह रहे हैं ना यही हो. हम कब कह रहे हैं कि ना हो स्मूथ, जब आपको एक फोरम मौजूद है. व्हाई यू नॉट अवेलिंग ऑफ द फोरम? वो मैं करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूं. जैसे आपने अभी फरमाया कि बगैर पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना. ये जरा पेज 12 पे पढ़. मेरी ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह, ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक डायरेक्शन है टू द IG एंड चीफ सेक्रेटरी. ये जरा पढ़ लें पेज 12 पर, और माय क्रिमिनल ओरिजिनल. ये लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख रहे हैं, ये जो है इलेक्शन कमीशन वाले. विद ग्रेट कंसर्न
I have the honor to state, to bring into your kind notice that this office is flooding. This office is flooding with numerous kind of applications, almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates, particularly belonging to इस खत का इस केस से क्या ताल्लुक है? इसी ये से जो ताल्लुक है, जरा इसी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने जो बकौल इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं उसका ये असर हो रहा है। जरा पढ़ लीजिए। जरा सवाल तो खत्म होने देना। आपका हमने जो ऑर्डर पास किया 22 दिसंबर का ऑर्डर था, ठीक है? ये 22 दिसंबर का ऑर्डर था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कोई खत आप पेश कर रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं। है, बिल्कुल है। इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने? रिपोर्ट नजर नहीं आपकी कंप्लेंट कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर दो कॉपी नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की, आपने कहाँ फाइल की है? चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी उन्होंने भेजा। ये किधर, ये आपकी कंप्लेंट किधर है टू ईसीपी? कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाऊंगा। हमें हमारे पास नहीं आई है ना, अभी दे रहे हैं, देखते हैं इन्होंने क्या कंप्लायंस की ऑर्डर दी। वो मैंने जो है पेज जनाब को बताया था उस पर है, वही हमने भेजी थी। पेज 23 प्रेयर है और वो शुरू होती है मेन पिटिशन में, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 47 में ये शुरू होती है हमारी कंप्लेंट। पेज 13 से शुरू होती है, पेज 13 से लेके पेज 23 तक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन 47 में। और अब अगर इनके अपने चीफ इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी, I'll ask the question again. You have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. In this order, in paragraph 4, it was stated the petitioner, or for that matter, any person representing any other political party in the electoral process may approach the ECP today at 3 p.m. for the redressal of their grievance relating to the election. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है in the CP Constitution Bill 47, 13 से 23. May I read the whole or may I read the I last? don't know which file number, tell me the file This number. is Constitution Bill 47, 23. 13 से शुरू होती है तहरीक इंसाफ बनाम वर्सेस द फेडरेशन एंड देन द इलेक्शन कमीशन। जी ये पेज 13 पे। ये तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसको आपके पास कॉपी मिली है? ये तो उन्होंने कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है ये किधर, ये तो पहले की बात है ना, उसके बाद का ऑर्डर के बताएं बात। ये ऑर्डर तो इनके पास होगा, ऑर्डर इन्होंने मुझे कोई नहीं दिया इलेक्शन कमीशन अब आप, हम तो थक गए सवाल पूछ के, अब दोबारा सुन लीजिए सवाल। सर इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? वो हमें देखा। कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेज। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेज 14 से सीपी में। I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. मैं करता हूं सर, इनका जवाब भी मुझे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर आप सर, आपका सिर्फ कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ पीटीआई The commission taking immediately notice has issued instructions। ये मोटी वाली किताब में पेज, इसका पेज नहीं है, तीसरे नंबर पे ये पेज नंबर नहीं डाले।
Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. ये election commission ने कहा है. ठीक है, ये ठीक है, और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है. कहा वो तो उन्होंने, और complaint पेज कर दी उन्होंने. मैंने अपनी जो पिटिशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है. इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी प्रोविंसेस में भेजी. ठीक है सर. अब ये प्रोविंशियल, इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था. ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में. इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें. उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं, पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसर को ब्लॉक कर देती है, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जाने. शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होगी ना. पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ. ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है? वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें. तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें. अब ये देखें पेज 12 पे जरा काइंडली रीड, बेयर विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ. विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, with great concern I have the honor to state to bring. I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204, it's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now, if you are saying, मैंने नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक. सर आप प्लीज ठहरे, मुझे नहीं मिली है ये. आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना. अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए. अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस. ये 200 सफे में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा. नहीं करें साहब, अब इतना क्या और कर लें, कोई फर्क नहीं. हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे. आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा. कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना. अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं. क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं. अब आप देख, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है. हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है. लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs, ROs सबको इशू कर दिए हैं. अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है. जरा ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है. आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें. आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना. चलिए बोले. पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे. पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया. दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं. उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस. अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना. हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिखे. अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है, ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा. आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज.
With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी 24 दिसंबर 24 दिसंबर है। कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए 24 ये वही तो इन्होंने उसी दिन नहीं आप पढ़िए ना प्लीज डेट ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें उसकी है 26 दिसंबर 26 दिसंबर तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना उसके बाद की भी मैंने सारी 26 के बाद की कोई बात बताएं 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी ठीक है अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो वो बता दीजिए मैं आपको सीडी भी चला के जरा देख लीजिएगा और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ चलें अच्छा करते हैं आप इट्स सिकनिंग अदरवाइज लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था वहां हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी वो पूछते थे आप किसके हो तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी इनके 26 के बाद भी यही हुआ ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है लिखी है कहाँ लिखी है ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं लिखी नहीं कहीं आपने सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे नहीं क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा लिखा यही है और क्या किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ ये जरा मुलायजा कीजिए मेरे ग्राउंड्स उन्होंने यहीं से किया ये देखिए दैट डिस्पाइट ये पेज कहाँ से पढ़ने ये पेज 3 the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के last paragraph that despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, तो unprecedented. अंग्रेजी है ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है ये देखिए ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है आपकी जुरिस्डिक्शन आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को और ये आपने क्या किया जी सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले या इनकी ग्रीवेंस देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड वी हैव टेकन every steps to ensure that their nomination papers are accepted and the RO has confirmed the summary says so खोल के देखिए क्या चीज है ये तो ये समरी लगी है सर नहीं तो आप वो नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए सर वो ये अभी once the RO finalizes these रिपोर्ट लगाई है पे जो 22 पे हमने लगाई हुई है जनाब हमने लेटर भेजा ये पार्टी वाइज नहीं है सर देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स सिर्फ यहाँ जमा करा के रिपोर्ट दी है हम नहीं इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप Compliance में सर अगर ये- इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों क्या सर वी डिड इंश्योर ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें कंप्लायंस हुई है जो हमने लेटर लगाए हैं कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं नो सर मैं आई रीड इट सर ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके नेक्स्चर्स हैं इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 19 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary ये समरी लगेगी तो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें मांग रहे नहीं खड़ा हैं हो सकते कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए और उनको क्यों नहीं इलेक्शन No, कमीशन we did issue direction to each and every corner. आप आईजी को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस को हाई हैंडेडनेस How come? करता है आप क्यों नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन के ताबे है इस वक्त सारी चीजें मशीनरी जो है दे हैव टू स्टैंड विद यू
They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section Article 204 with regard to the. The Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is enjoined. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake. If the elections are not held freely and ये fairly. जो समरी है तो 31 लोगों के लिए ना 31 फॉर्म सर जितने भी आए थे सर उनको हमारे पास ये आए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया सर जितने भी साथ साथ आते रहे द कमीशन टुक स्टेप्स एंड फॉरवर्डेड इट अकॉर्डिंगली एक आदमी राजनपुर रुझान और बक्खर और सक्खर से तो नहीं आ सकता यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन वो तो वहीं करेगा मुकामी तौर पर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, मैं वही लेटर आपको प्रोविंशियल इलेक्शन और इन्होंने जो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में लिखा है इन्होंने वही लिखा है कि वो लेटर आपकी पूरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पढ़ ली है, उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं लगाया है। आपने बस जनरल बातें की हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वी कंप्लीटली एग्री विद दिस, वी 100% एंडोर्स इट। यू हैव नॉट मेड एनी एलिगेशन। I mean, what are we doing here? Sending people for contempt? You have just made, yes. This court has fixed the day, ensured the date for elections is taken fixed. This court is trying its utmost not to disrupt the election process. But where is there any specific allegation? Make a specific allegation. All it is, it's just general words. The Election Commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections. Yes. Under Article 218, yes. That, sir, you just saying these general बातें कर रहे हैं, तो कोई specific बात हो तो हम उसको देख सकें. So where is anything specific? But, so what do you, we can, unless you want us to substitute ourselves as Election Commission of Pakistan, that we should hold the elections ourselves, वो भी हमने करके देख लिया कि जो फिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में, जो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे, एंड फिर हम सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त ज़ाया किया, और फिर वो मालूम हुआ कि कोई भी सब्सटैंशिएटेड एलिगेशन नहीं थे। 35 पंचर वाली जो बात इसी कोर्ट में हुई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेज़ाब्तियों का अनफर्ल किया था, अगरचे और हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड हर चीज मुस्तरद हुई। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इरेगुलरिटीज उन्होंने 47 स्पेल आउट की थी, उसमें भी यही हुआ था आपकी इसी को। भाई हम तो जजेस नहीं थे ना, मैं ये नहीं कह रहा, आप जो भी जजेस थे उस वक्त उन्होंने ये डिटरमिन किया, आपने कोर्ट का बेतहाशा वक्त ज़ाया किया आपने, और कोर्ट ने आपके सारे एलिगेशन मुस्तरद कर दिए। कोई कंपैरिजन नहीं है उसका और इसका, कोई कंपैरिजन नहीं। आज जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में आप देख लें जरा, ये खुद चीफ अपना इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेल आउट किया 12 पे, जो मैंने अर्ज किया। इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना, आप ही ने अपॉइंट किया है। मैंने नहीं किया ना। तो आप जो बातें आप देखिए, कोई पाकिस्तान को जिम्मेदारी नहीं लेता है, बस क्यों नहीं प्रोएक्टिव इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन और इनको अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इससे ज्यादा डायरेक्शन हम क्या दे सकेंगे? 22 दिसंबर का ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, और उस पे अगर इन्होंने हमें टाल मटोल की होती, we would have taken them to task। तो नहीं किया ना अमल। अब आप सुनते नहीं ना, हम आपको सुनते हैं, आप बात करते हैं खामोशी से, वो बात कर रहे थे, आप उनको भी बार बार मैं तो आपको ही सुने जा रहा हूँ, कब मैं बोल रहा हूँ, आप ही बस बोल ले, फिर आप बोल ले, हम चुपचाप बैठते पुराने स्टाइल में। वो 12 वो पेज पढ़ ले। Whenever you finish, you tell us। 12 पेज पढ़ ले। 12 पेज आप बात समझने की कोशिश करें। मैंने समझ लिया। 24th of December। This report is dated 26th of इन्होंने जो December। कंप्लायंस रिपोर्ट में रेफर किया ना, उसमें इन्हीं का रेफर किया है। कंटेम्प्ट पिटीशन में आपकी 2 पेज की प्रेयर है, आप प्रेयर पढ़ें, वो कंटेम्प्ट में आती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जलसों की इजाजत दें, रैलीज की इजाजत दें, यानी कंटेम्प्ट तो सिर्फ इस चीज की कंटेम्प्ट है कि ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस, उस हद तक कोर्ट देख सकता है कि जी हमारे ऑर्डर को वायलेट किया है, तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अगर आप अपनी प्रेयर क्लॉज पढ़े ना, पेज 6 से 7 पे,
तो आप तो इसमें ये भी कह रहे हैं respondent number 2 may kindly be directed to take against the culprits under section 55, 184, 186, 187 and 188 of the Election Act. जिन्होंने मेरे प्रपोजल्स को उठाया है, जिन्होंने मेरे सेकेंडर्स को बात उठाया तो सिर्फ उस ऑर्डर की हो रही है ना, हाँ, आप इसको नई पिटीशन के तौर पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है. दिस इज नॉट ए फ्रेश पिटीशन, दिस इज ओनली द प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट Sir, which can be initiated against the alleged contemner if you will make out the case of contempt. सर पैरा फ्री ऑफ टाइम है शॉर्टन. माय लॉर्ड, आप चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये वी विल नॉट काउंटेनेंस एनी डिले इन द इलेक्शन. आई डोंट वांट टू बी प्रीवी टू दैट एट ऑल. आपने मेरे वकील को भी कंटेम्प्ट नोटिस दिया, सो आई कांट टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आई डोंट वांट द डेफरमेंट ऑफ द इलेक्शन इवन फॉर अ मोमेंट. प्रेयर क्लॉज तो आपकी मेन जो पिटीशन जो यहाँ लगी होगी उससे भी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट. सर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ 2 पेज की सर आर्टिकल सेक्शन 184, 185, 186, 187 जो भी पकड़ता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो भी डिनाई करता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन. व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन स्लीपिंग ओवर इट एंड प्रीवी टू Because ऑल you've not filed a single complaint. सर मैंने We are asking you repeatedly, show us your complaints that you filed before the election commission. And it is Election CM commission will, if it doesn't entertain your complaint, it's a different matter. They have implemented our order. Now, if you have a complaint, you should show us, this was my complaint, this was left unattended. जरा सीडी देख लें फिर जो कुछ हो रहा है Afir CD Khosa Sahab, I think you should speak and I don't know, you don't let us talk at all. ये it's the other way around. मैं तो सर as a law as an officer of this court मेरी तो ये ट्रेड में ही नहीं है कि मैं किसी को obstruct करूं या ये कंटेम्प्ट में कंप्लायंस होनी है ना, Compliance कंप्लायंस. ही तो अब yes. आप इनको अगर शिकायत करेंगे कोई, जो कि बार बार हम आपसे कह रहे हैं, बिकॉज हमारा तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, इसके अंदर हम बुला के किसी को कहें कि तुम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस करो, चार्ज फेस करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे. लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हैं इनको, बताइए. बिल्कुल दे रहे हैं सर. एक मिनट, एक दे रहे हैं सर. 550 पूछ लेना उनसे, एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको. सर मैं सवाल किया है, जवाब तो देने दीजिए. सर विद योर परमिशन सर, ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है इसमें एज मनी एज 23 यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है. 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decide it according to law. There is an index, sir. There is a summary, and it is on the record, sir. सर ये जो फरमा रहे हैं पैरा 3 में पढ़ देता हूँ. Okay. As you know that filing of nomination papers as per election schedule issued by the ECP is concluding today, while the receiving and filing of nomination papers is still marred by the incident of fear, intimidation, snatching of nomination papers and other CS such acts in the hands of the police. In this way, the candidates are being discriminated against, as conducive environment is not being provided to all without any discrimination, December 2023, and unhinderedly. But the discouraging aspect of the situation, as mentioned above, is so that the returning officers, who mostly are from provincial / federal executive, are not acting in a proactive manner as the electoral laws demand from them. They seem unable to control the situation even inside their office premises by making it conducive for all the prospective candidates to attend their offices unhinderedly, without from intimidation, any discrimination for receiving and filing of their nomination papers uninterruptedly. Para 4, as you also know that all the executive authorities are bound to assist the Election Commission of Pakistan in the conduct of elections in a fair, free and transparent manner as stipulated under Article 220 of the Road with Section 5 of the Elections Act 2017. But contrary to this, the concerned administrative authorities, including DRO, ROs and other functionaries working under the administrative control of the provincial government, are not rendering the requisite assistance as required
required of them under the quoted provision of law to provide, and hence is the clear violation of constitutional provision as well as of the provisions of electoral laws and directions instructions of ECP 2. Foregoing in view, it is therefore requested kindly to intervene in the matter by issuing strict directions to all concerned under your administrative control to act proactively, effectively and promptly to provide a conducive environment at the premises of the RO's offices so as all the prospective candidates could file their nomination papers of ease without any hindrance, fear and intimidation. Besides, necessary direction may also be issued to all deputy commissioners and other administrative officers under your kind control to control the situation within the premises of their respective offices and take strict and stringent actions against any officials of any department who is intervening and impeding the nomination process, creating hurdles for the candidates in receiving and filing of their nomination papers. Your personal attention, intervention and your timely response in the matter to control the situation is requested, which shall be violated highly. अब इसमें जितने हमारे रिजेक्ट हुए हैं उसमें 90% है कि जी प्रपोजल सेकेंडर इनके हाजिर नहीं आए, कैंडिडेट हाजिर नहीं आया। अब ऐसे में जब आपने ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस खड़ी की हुई है, जब पता करता है तो आप उठा लेते हैं और उनके खिलाफ 216 के उल्टा पर्चे दर्ज कर देते हैं। Even lawyers were incarcerated and the bars had to intervene at places. My own son was arrested. Forget, अच्छा नहीं लगता personal बात करना, but nevertheless this is what is happening around. Can anybody shut his eyes? But this is the worst type of pre-poll rigging ever in the history of Pakistan which is taking place. अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ये level playing field है, तो then why hold the elections at all? फिर अगर ये इस तरह से करना है कि ये कि obstruct कर देना है और ये सारे एक किसी और पे क्या किया है जी? आपके ये पेज 12 पे जो खत है आपके पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन, provincial election commissioner. Sir, this strengthens the stance of the commission. The provincial election commissioner has issued direction to the chief secretary and inspector general of police to ensure level playing field and to. लेटर किधर है जो लिखा आपने? Sir, लेटर किधर है? ये ना सर, नहीं, ये तो 12 तो ये तो प्रोविंशियल डायरेक्टर कमीशन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने खत लिखा है ना। तो इसके बाद इसकी कंप्लायंस चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या करनी थी, उनको खत लिखा है ना कि आप देखें इस मैटर को, ये प्रॉब्लम जो है। तो 24 का लेटर है, 28 को हमारे किसी को नहीं जाने दिया गया, 90% रिजेक्ट हुए हैं कि आपका प्रपोजल सेकेंडर है, 29 को नहीं जाने दिया, 30 को तशद्दुद किया। वो जरा देख ले सारे प्रोविंसेस में क्या हुआ है, ये 24 के बाद की ऑर्डर लेटर के बाद। सो देयरफॉर आई वाज सेइंग कॉस्मेटिक किस्म की जो है लेटर लिख देना काफी नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो पंजाब ने जो खत लिखा है तो उसके ऊपर कोई कंप्लायंस की है चीफ सेक्रेटरी साहब ने? सर ये समरी जो लिखी है ये 24 इस पे है सर, 25 का एक लेटर है समरी के पेज 3 पे सर, नहीं ऊपर लगाया है। इसके कंप्लायंस पूछ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लायंस की है, कोई उसमें कुछ इकदाम किए हैं? 24 दिसंबर के लेटर के जवाब आईजी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, ये दो को लिखा है ना। आईजी ने ना वहां से पुलिस हटाई, ना वहां से चीफ सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कोई हिदायत दी, दोनों ने विद इम्प्यूनिटी उठा के तो जो है सारे अंदर कर दिया। क्योंकि इस लेटर की कॉपी तो आपको भी आई है ना, सेक्रेटरी उन्होंने मार्क की है ना, इंक्लोजर के तौर पे आपको भी मार्क की है ना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हम सर रिकॉर्ड से देख लेंगे, लेकिन इसमें नॉमिनेशन पेपर्स वर स्मूथली देन फाइल्ड और इसका रिकॉर्ड है, हमने भी उनको भिजवाए हैं सर। ये समरी अगर आप देख लें 26 को भिजवाए हैं, 27 को भिजवाए हैं, 28 को भिजवाए हैं। इवन मतलब ये टिल लास्ट व्हेन एज एंड व्हेन देयर कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड देयर इज समरी एंड देयर इज अ रिपोर्ट दैट action has been taken, sir. Your allegation is against whom? Sir? Ji? Sorry, sir. Your allegation is against whom? My allegation is that the election commission Is against whom? respondent number 2, respondent Give number the 4, name. respondent number 7. Give 2, the name. 4 and 7. Give the name. Who are these? Yes. 2 is उमर हामिद खान, Sir Umar Hamid Khan, Secretary to the Election Commission. 4 is the Chief Secretary Punjab, and Umar 7 Hamid is Khan to is supporting you. 7 is the IG Punjab. Umar Hamid Khan is supporting you. Very many letters. Sir, but He is supporting you. okay, fine, sir. मैं तो कहता हूँ proactively करें. It is not Umar Aslam Khan who is obstructing. It is the IG and the Chief Secretary who the subordinate staff. Not even personally the IG or the Chief Secretary.
Yes, okay. So you only have problems with Punjab? नहीं नहीं सर, बाकी चीफ अभी तक सेक्रेटरी जो आपने खत बताया है वो तो ये आप देखिए आए जो एविडेंस पंजाब की है, ठीक कह रहे हैं आप, एविडेंस मेरे पास पंजाब की है, फिर आप बोल बाकियों की मेरे पास और एविडेंस। बाकी इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक नॉन कंप्लायंस है वो तो आप खुद कह रहे हैं कि वो खुद खत लिख रहे हैं, उन्होंने किया है, हमें तो टाइम तक बुलाया है, 3 बजे हमारी हियरिंग भी ये की ठीक कह रहे हैं है, आप। उन्होंने खतूत भी जारी कर आप दिए, ठीक कह रहे हैं। कंप्लायंस भी कर दी। सर आप ठीक कह रहे ठीक है ना, अब रह गया आपका ये पंजाब का, बिकॉज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट यू ओनली पॉइंटेड आउट ओनली दिस लेटर पेज 12, वो आपने रिपीटेडली बताया कि पंजाब में ये हुआ है, तो अब पंजाब के एडवोकेट जनरल है जी कोई मौजूद इसमें? सर मेरा सिर्फ सबमिशन ये है, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इज राइट, मेरा सबमिशन ये है कि ये सिर्फ रिचुअल से आप एक लेटर लिख देने से काम नहीं बनेगा। यू हैव डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर ऑल दिस हैपेंस डजंट हैपन व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब। ये अब आईजी को अगर फ्री हैंड दे मिल जाता है, चीफ सेक्रेटरी अगर डिफाइंस करता है, देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ इटसेल्फ वेयर बाय द आईजी एंड द चीफ सेक्रेटरी कैन बी टेकन टू टास्क बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दे शुड बी रादर टेकन टू टास्क बिकॉज the entire edifice of the state depends on एडिशनल that. भी नहीं है। Did you move an application before the ECP to do so? Yes, sir. सर इसमें मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं सर, मैं उस दिन आर्गूमेंट्स हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने Did you भेजा था। move an application to the Election Commission of Commission of Pakistan Pakistan to take action against the IG or Chief Secretary of Punjab? तो वो तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है, मुझे लिखने की क्या जरूरत है, वो तो खुद लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर। They have not reverted. अब आपसे सवाल पूछना जवाब ही नहीं देते हैं, क्या करें हम? थर्ड टाइम मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ले रहा है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि दे फ्लडिंग कंप्लेंट। देखिए जब ये 12 तारीख का खत आपको भी आया है चीफ इलेक्शन कमीशन को पंजाब की तरफ से, तो इसके कंप्लायंस आपको भी देखना चाहिए, आप अपने लेवल पे देखना चाहिए था आपको कि अगर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, आईजी को लिखा, वो अपने तौर पे टेकअप करते कि भाई ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है। Meetings हुई, आपका अपना ऑफिसर लिख के दे रहा है ना, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन आपको खत लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, तो उसको आप देख लेते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ऑर्डर है हमारा, जिसकी कंटेम्प्ट में ये आया है, उसमें यही बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है। उसके बाद इन्होंने विद इम्प्यूनिटी उठाया है और फ्री था सर, कोई कंट्रोल नहीं था। क्या कह रहे हैं जो आपने सर आर्गूमेंट्स में उस दिन जो 23 को जनाब ने भेजा था, कोर्ट असिस्टेंस, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं जनाब? Yes, sir, special secretary. सर ऐसे है कि पंजाब से आए हैं? ये सर पंजाब से आए हैं? नहीं नहीं, special secretary for it. सर हमने ये इंश्योर किया है उस दिन जब ये लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की इलेक्शन कमीशन में नहीं, मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन एक खत आपको लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी को उसने एड्रेस किया है, आईजी को किया है, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आप। सर हमने इंश्योर किया है कि तमाम नॉमिनेशन पेपर इंश्योर करने के अलावा आपने कुछ, ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का स्पेशल सेक्रेटरी है, तो आपको देखना चाहिए कि जब आपका अपना ऑफिस ही इंटरनल आपकी वो है ना, वो तो सर उसके बाद स्क्रूटनी हुई है, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स दी, वहां पुलिस ही पुलिस थी सर। इसमें लिखें Learned counsel for the petitioner. नहीं, ये 47 तो खत्म हो गई है। अच्छा, ये है 47 नहीं है सर, वो ये ओरिजिनल 40 है ये, इसमें वी आर हियरिंग 40। इसमें लेकिन क्रिमिनल ओरिजिनल पिटिशन नंबर 40 of 2023। Constitution petition number 47/2023 was disposed of by order dated, इसमें लिख दीजिए learned counsel for the petitioner submits, was disposed of by order dated 22nd December 2023, and it is alleged
that the order has not been complied with. In this regard, reference is made to a letter dated 24 December 2023 of the Provincial Election Commissioner of Punjab, addressed to the इलेक्शन कमीशन को हमने Chief Secretary and Inspector General of Police, उसमें चेंज Punjab, Government of Punjab. चेंज दी चेंज आई Full stop. चीफ सेक्रेटरी पंजाब The Election Commission of Pakistan, the representative of the Election Commission of Pakistan. Next paragraph लिख दें. The representative of the Election Commission of Pakistan state that they are doing everything to ensure free and fair elections in the country, and have submitted compliance report dated 26 December 2002 and have submitted a comprehensive compliance report, capital C, capital R, dated 26 December 2023 in this court, comprising of 161 pages, stating that requisite instructions have been issued. Full stop. We inquired from Learned Counsel as to state the precise allegations that the petitioner has, and were told, and Learned Counsel referred to the letter of the Provincial Election Commissioner Punjab, and stated that the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, have disregarded the instructions of the disregarded the instructions कहेंगे इसको disregarded the क्या कहेंगे इसको instructions कहेंगे directions the directions of the Provincial Election Commissioner Punjab. So, under the circumstances, that notice be issued, that in the first instance notice be issued to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, and Advocate General Punjab to submit क्या कहेंगे concise statement, to submit reply, to submit report as to submit report with regard to whether the directions of the said directions have been complied with, and if not, why the same have not been complied with. ठीक है सर एक और चीज अर्ज थी कि एमपीओ के इन्होंने कोई 550 के करीब एमपीओ के ऑर्डर्स इशू करके हमें वो डिटेंशंस भी इन्होंने की एमपीओ का इससे क्या इनकी प्रोसीडिंग से क्या ताल्लुक है? Goza Saab, and we are faced, we have the benefit of senior counsel. ठीक है, now it doesn't look nice that we have to keep reminding you. अब आप ही लोग हम पे कल उंगलियां उठाएंगे कि जी 204 में आपने ये कैसे कर दिया तो वो कैसे कर दिया. हमने इलेक्शन कमीशन को जहां तक हम दरखास्त दी है, 27 को दरखास्त दी. आप आपको कौन, हम आपको कह रहे हैं दे इनको, बाकी अदालतें भी खुली हैं. अब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो मैटर था ना, टेक्निकली स्पीकिंग ये मैटर था हाई कोर्ट ऑफ
लाहौर का, मगर फिर भी हमने आपके लिए एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो लेट्स नॉट जस्ट मेक जनरल एलिगेशन. जहां आपने कोई स्पेसिफिक बात की हम पूछते हैं. अब वो पंजाब, अब वो सिंध में गया और बलूचिस्तान में आपका एलिगेशन पंजाब पे हमें समझ आई फाइनली कि भाई ये आपका मुख्तसर एलिगेशन है. तो जहां तक जेन्युइन बात हम करेंगे, मगर एक ये ना कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है. डोंट बी हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड, हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. 1960 का एमपी हो जी. ये आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना कि आज तक 1960 का आप पाकिस्तान, लोग खत्म नहीं करते ना, जब आपकी गवर्नमेंट होती है आप खत्म नहीं करते हो. रिपील कर दें उसको. Do you know under the conditions that the elections were fought when Ziaulak was there? You should know better. I know. You know. Yes. खत्म कर दिया करें आप जब Do भी. you know the elections when Mohammad Khan Junejo became Prime Minister? Do you remember those? वो तो So they were क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से भाई इलेक्शंस. तो don't just say that the worst election. लिस्ट बना के रखिए, जब गवर्नमेंट आए ना सारे ऐसे लॉस खत्म कर दीजिए. सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वरना तो वो शेरवानी सिलवाने चले गए थे. हाँ? अच्छा. इस कोर्ट के इलेक्शंस करवाए. Anything else or you happy? अगर जब हम सवाल पूछा करें नाराज ना हुआ करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे. हाँ? ब्रेक तो कल नहीं नेक्स्ट. हाँ, इसमें कब रखें? कल के लिए रख ले, परसों के लिए. वो रिपोर्ट कल हमारा वो लार्जर बेंच है, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा. मंडे को कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को हमने वो गजाली साहब बेचारे पास्ड अवे, सो वी होल्डिंग अ फुल कोर्ट ऑन दैट. मंडे इज ऑल राइट, बिकॉज उनको थोड़ा वक्त कल रखेंगे, वो टाइम ही ले लेंगे, फिर यही होगा. ठीक है, मंडे को कर दें. ठीक है सर. 8 जनवरी. ठीक है. आर यू अवेलेबल? I'll be available. ठीक है, 8 सही है. अच्छा, मैं आ जाऊंगा. कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे यार, 2 मिनट का काम है. चलो ठीक है. 5 मिनट का ब्रेक लें. मुझे कोई अच्छा, हम अब कौन सा केस है अगला? बस खाली हुई बट्टू. अच्छा, मिसिंग पर्सन का केस है. Let us refresh ourselves. 5 minutes. We'll come back in 5 minutes. ठीक है. किस उसमें आप है ना, और कौन? आपको तो हमने सुन लिया था ना. आपने अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस फरमाया था. अब आमना जंजुआ साहिबा हैं. ठीक है जी, मैंने कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा जजमेंट से आपको रेफर कर दिए. सजेशन जो आपने मांगी थी, मैं सिर्फ उस तक करूंगा. आप अटॉर्नी जनरल रेफर करें, आप सजेशंस दीजिए. जी ठीक है. जजमेंट्स क्या, हमें इसमें क्या जजमेंट की जरूरत है? क्योंकि इस पे
Supplementary list. Serial number 1, civil petition 1503 of 2022, etc. Government of Pakistan through Secretary Ministry of Interior, Islamabad and versus Iman Zainab Hazir and others. इनका तो वापस हो गया था कल मेन केस। आपको हमने सुन लिया था, शायद हम उनको सुनने में मैं सिर्फ एक मिनट से मैं जनाब को जजमेंट्स लिखवाना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी मिसिंग पर्संस के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले दे चुकी हैं। मैं सिर्फ जनाब को इन्फॉर्मेशन के लिए और असिस्टेंस के लिए ये किताबें दें हमें। 2012 SCMR 1958 दिखा दें। जी जी 1958 लिस्ट बना लेना इसकी किताब। पैराग्राफ 35 and 49 सर इसमें। सर अगर इजाजत हो सर एक पैराग्राफ 30 सर मेरी और एतजाज आसन की तरफ से पर्सनल माजरत, कल हम आ नहीं सके। ये केस Your case was very ably argued and is being argued. मैं सिर्फ अपनी और चौधरी एतजाज आसन साहब की उन्होंने explanation दे रहा हूं कि हम क्यों नहीं आ सके, इसलिए कि वो ये उनकी मर्जी किसको एंगेज करें। नहीं हमने नहीं ये आप पेज क्या बता रहे थे 1958 बेटे को अरेस्ट कर दिया गया और उनकी बेल और रिक्वायरमेंट हुई फाइनली। We are hearing this case now. रात को मैं बता रहा हूं चलिए ठीक है, मोटर में बंद हो गया। हम आ नहीं सके इसलिए को दिया। I'm sure he has done a wonderful job. Thank you sir। No, we don't mind. You want to argue, you argue. हमें कोई इतराज नहीं किस कौन आर्ग्यू करे। जी आप बताइए कौन सा पेज। जी सर पैराग्राफ 35 में लौट 35 में लौट पेज 1993 पैराग्राफ 35 जी Malot. May I read, Malot? Admittedly, the provincial government has power to make laws for maintaining law and order situation in the province, and to the extent of its territory, there is no limitation on its power to make laws as far as subject under discussion is concerned, except that no law shall be made which is against the fundamental rights guaranteed by the Constitution, including Article 9, 10A and 24 thereof. It has been noted earlier that अगला जी सर और इसका 35 and 49 पैरा 49 में 49 इसमें जो ऑर्डर फरमाया और फाइनली डायरेक्शन फरमाई पेज 49 पे है। मतलब अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो जनाब खुद देख लें। Thus in view of the above discussion, the following order is hereby passed. Number 1, the court in exercise of jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution has jurisdiction to enforce fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution, as it considers that a question of public importance involving enforcement of the fundamental rights enshrined under the Constitution, which is Article 4, and with fundamental rights under Article 9, 10A, 14, 15, 17, 18, 24 and 25 of the Constitution have been violated. The incumbent provincial government has failed to establish writ of law in the province, on account of which the fundamental rights of the citizens noted here and above have been violated. The people of Balochistan also include civilians, members of the law enforcement agencies, that is the police. ठीक है, खास बात आप बताएं ना। फंडामेंटल राइट्स का सारा है वो तो जाहिर है। तो हम आपको ऑब्जेक्शन तो हमने ओवररूल कर दिया ना। जी सर वो ओवररूल जनाब। तो फिर इसकी रेलेवेंस नहीं रही ना। जो मेनली हमने तो आपकी एंटरटेन कर एंटरटेन फरमा ली जी सर। अभी नंबर आज लगा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जनाब ने कल ऑर्डर फरमा दिया था कि नंबर लगाएं इसको, वो तीन में शायद लग जाएगा। उनकी पिटीशन के ऊपर जनाब ने वो ऑब्जेक्शन जो था रजिस्ट्रार का कल तो हमने शॉर्ट एक ही लफ्ज का ऑर्डर है जी सर वो लेकिन नंबर लगना चाहिए और कुछ नहीं जी मगर हमने कह दिया ना, वो हमने मुस्तरद कर दिए हैं। इस ऑब्जेक्शन ओवररूल हो गए थे आपके केस में जी सर, लेकिन आज लिख देंगे, फिक्र ना करें। जी सर ठीक है, लेकिन इसमें मैं जनाब को जो गुजारिश करना चाह रहा था, जो डायरेक्शंस मिसिंग पर्संस के हवाले से थी वो भी इसमें सारी शामिल हैं कि किस तरह आगे प्रोसीड करना है, कौन कौन वो बताइए वो कहाँ है? जी वो इसमें सर तो फिर कमीशन बना होगा ना उसी ऑर्डर की रोशनी में। पुराने जो कमीशन बना है इसका इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का, वो कब बना है ये बताएं ना। वो ये जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? जी सर वो तो 2011 में कमीशन बना था। ये इसके जजमेंट में बताइए। जी सर इसमें सर जो है एक ही किताब है।
یہ پیراگراف میں لوٹ جو پیراگراف اس میں 3 ہے یہاں سے شروع ہے کہ 3 جی سر پیج 2020 کلنگز کی بات ہے زیادہ, مسنگ پرسنس کی بات کہاں ہے؟ کلنگز, ابڈکشن فار رینسم, سیکٹیرین کلنگز, نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا مسنگ پرسنس کی بات, وہ کہاں ہے اس میں؟ جی سر وہ ساری اس میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ تو زیادہ تر ٹارگیٹڈ کلنگز ہے نا, جی رینسم, سیکٹیرین کلنگز. جی یہ پیراگراف 5 سر اگر دیکھیں گے IDPs, we direct the government, پیرا 5 سے اوپر 3 لائنیں, we direct the government of Balochistan to accelerate this process and at the same time پیراگراف کون سا پیج 5 بتائیے؟ کون سا ہے یہ؟ page 2005 آرڈر آف دی کورٹ نہیں 2005 وہ سب پیراگراف 5, the federal government. جی جی فیڈرل گورنمنٹ سے اوپر کی 3 لائن اینڈ دین فیڈرل گورنمنٹ پیرا 5 میں بھی اور پھر دین 6 بھی یہ تو مرڈرز اینڈ کلنگز ہوئی تھی نا, سیکٹیرین وائلنس. جی لیکن یہ ریلیونٹ نہیں ہے. جی نیکسٹ سر جو ایکسکلوسیولی مسنگ پرسنس کو ججمنٹ ہے سر دوسری PLD 2014, یہ سو موٹو ایکشن لیا تھا آنریبل سپریم کورٹ نے. PLD 2014 سپریم کورٹ 305 ریلیونٹ اس کے پیرا ہے سر 16 اور 17 پیراگراف 16 اور 17 میں لوٹ پیج ہے 320. As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture. It is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The acting defense secretary through the though he apparently did his best could not achieve the object for which یہ ریلیونٹ ہے. جی مطلب ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ریلیونٹ ہے. جی بالکل. اینی ادر کیس؟ جی سر نیکسٹ سر ہے اس کا پیرا 16 بھی اینڈ 17 بھی سر 17 جی 17 میں سر ہے اور 18 میں بھی کچھ ڈائریکشن دی ہیں. 17 پیج اگلے پہ ہے 321 پہ. It may be out of context to note that in somewhat identical circumstances, the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated first so-and-so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006, despite the fact that the Nepal had not ratified the same. کریکٹ. آگے جی سر یہ سر پھر اس کو 18 میں بھی تھوڑا سا اس حوالے سے ادر ججمنٹ. جی سر دوسری ججمنٹ سر نیکسٹ ہے مائی لارڈ آتھر جج ہیں دھرنا کیس میں فیض آباد دھرنا کیس PLD 2019 سپریم کورٹ 318 اس کا ایجنسیز کے رول کے حوالے سے بھی 318 PLD 2019 سپریم کورٹ 318 اس میں ریلیونٹ پورشن کیا ہے؟ پیرا 43 میں لارڈ پیرا 43 42 میں لوٹ 42 سے پیج 348 the report submitted by پیراگراف اس سے مسنگ پرسن کا کیا تعلق ہے؟ سر رول آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ ان کا کتنا ہے, کیا رول ہونا چاہیے, کیا ان کا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اپنے مینڈیٹ میں رہے. اسپیسیفکلی کچھ ہے اسپیسیفکلی مسنگ پرسنس کا تو ایز سچ نہیں لیکن اسپیسیفکلی اگر اس میں ریلیونٹ ہے وہ جو ابھی لوگوں کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے جو کر رہے تھے وہ پروٹیسٹ, جی ان کو تو پروٹیکشن ملتی ہے کہ وہ پیراگراف پڑھیے نا آپ. جی لافل اسمبلی وہ کر سکتے ہیں. اس یہ دیکھیے پیراگراف 2 پڑھیے, پیراگراف 53 کا. جی مائی لارڈ 53 جی سب 53 کا 2 پڑھیے. جی Every citizen and political party has the right to assemble and protest
provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order, the right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. ये तो relevant होगा for the people who are protesting. My lord, my lord. फिर paragraph 3 भी पढ़ ले. जी सर. Protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission, which it must. I'm surprised you are citing this case. मैं तो हमेशा से इसकी मैंने जनाब को कहा था जी सर हम तो पहले दिन से इसके साथ खड़े हैं अगर हर इदारा अपने विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते जो कुछ हम देख रहे हैं या जनाब के पास आ रहे हैं और कोर्ट्स आते हैं अगला बताइए मैनोट इसमें जो मैं सिर्फ इस हद तक करना चाह रहा था पैराग्राफ 2 में द लर्नेड AGP टेंडर्ड ए डॉक्यूमेंट इन ए सील्ड एनवेलप व्हिच स्पेल्ड आवर आईज वो रेलेवेंट नहीं है इस केस के लिए ठीक है सर हाँ मैं जनाब कुछ इस हवाले से और सर इसमें हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं PLD 2022 सिंध 264 जी 264 सर PLD 2022 सिंध PLD 2022 सिंध 264 ये भी मिसिंग पर्सन्स के मुतालिक है सर इसका लास्ट पैराग्राफ टू 264 में लो नहीं एक्चुअल क्या चीज पढ़े हम जैसे 266 पे लास्ट पैराग्राफ है 266 लास्ट पैराग्राफ The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. ये तो जनरल बातें हैं तो कोई दो राय नहीं हो सकती जी ये दो जजमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैं सर वो भी मैं रेफर कर देता हूँ मिसिंग पर्सन पे बताइए जी मिसिंग पर्सन ये इसी हवाले से जो एक तो है सर PLD 2021 इस्लामाबाद पेज 1 जी relevant page para 3, 4 and 5 the incident ये वो मतीउल्लाह जान वाला केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था the incident took place The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं ये कल तो आप मतीउल्लाह जान वाला केस नहीं बता रहे थे आज आप जजमेंट साइड कर रहे हैं मैं तो बताना चाह रहा था अभी वहां तक पहुंचा नहीं था कि हुकूमत में कौन था पहुंचा नहीं था वहां तक दूसरी बात है कि मैंने कहा ये जिम्मेदारी फिर आप हुकूमत जिसकी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की उनकी जिम्मेदारी उनकी शायद इंटरवेंशन से ही ये जल्दी बाहर आए हूँ वरना तो देखे ना सर बाकी लोग 4.5 महीने बाद इमरान रियाज बाहर आया नहीं आपका गलत फहमी है ऑनरेबल कोर्ट की भी इंटरवेंशन थी इसमें कोई शक नहीं है नो ये भी आपकी गलत फहमी है कुछ फहमी तो हो सकती है गलत फहमी शायद नहीं आप सुनने ही हैं तो बता देंगे आपको आप बेहतर जानते हैं नहीं हम बेहतर नहीं जानते ये गलत फहमी या खुश फहमी या जो भी बात है ये हो गई थी रिकॉर्ड कैमरा लगा हुआ था जी उसका रेफरेंस है जी सीसीटीवी फुटेज शायद कुछ और नतीजा ना निकलता वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं यू कॉट विथ योर हैंड इन द कुकी जार तो आप वो फंस गए थे सर इमरान रियाज वाले केस में भी फुटेज लगा हुआ था प्लीज डोंट टेक द क्रेडिट it was egg on the face and I'm surprised not a single head rolled as a consequence
when something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you are so helpless to govern, if you had taken a stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 minute का केस ये सॉल्व होता था 2 मिनट में. नहीं, देखिए या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐशो कर लें. हर चीजें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे. ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था. मैं वही गुजारिश नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस. बस ठीक है. अच्छा, ओहो तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं नहीं बंदे को छोड़ दो. ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था. Show us a single order. Show us a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना उस वक्त करके दिखाएं. अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा कि जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता. आप कहें कि जी आज आपने क्या किया ये बताइए. सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस. सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है. और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा. बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था तो मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया. अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से. रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर. या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए. इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे. हमने कहा हमारे सामने आके बात करें. क्यों? ठीक है, वो आए सामने बात की. बिल्कुल क्यों. वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है. नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है. वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की. ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना. हमारा काम जरा सा देखें. आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स. तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है. अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए FIR काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें. अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है. आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें. और वो नहीं कर रहे. ये आपने नहीं ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर. प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर. आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी. जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences. ऐसे कैसे बाहर जाते हैं वो? उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी. वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा. 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months. फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा. शायद वो, बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है. मैं इस पे आगे चलता हूँ. शाहीन साहब, you are up now. I will use another word. Can you plead a case of a person not before us? अगर बंदा इस काबिल नहीं है, Who are you to plead his case? सर अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, लेकिन जो काबिल है जिसका आपने जिक्र किया उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे. मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी करें ना. फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है. नहीं, हमारा काम नहीं हो रही. देखिए अब आप फिर इसको वही बना रहे हैं सियासी अखाड़ा.
ہم یہ کہتے ہیں مائی لارڈ کمیشن جب بنے گا. یہ حد تک کی جو پٹیشن تھی نا جو آپ نے فائل کی اس میں آفس آبجیکشن کے لیے وہ لگی تھی اور دیٹ ہیز بین جی وہ تو فردر جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ ہوں گے ویٹ فار سم ٹائم. جی سر اگر آپ یہ انڈیویجول کیسز کریں گے تو پھر آپ آفس آبجیکشن سسٹین کرنا پڑیں گے. ہم آپ کی پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ کا جینوئن کنسرن ہے مسنگ پرسن کی پبلک امپورٹنس اور پبلک ایٹ لارج. اگر آپ کے ذہن میں 2-4 ہی لوگ نہیں سر نہیں ٹھیک ہے نہیں 2-4 نہیں سبھی جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں تو جناب کا اونلی ان ریلیشن ٹو دی سی ایم اے وہ آپ کی آفس دیکھیں پھر اب آپ تشریف رکھیں ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں نا. نہیں سر نہیں میں تو اپنی بات واٹ بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن وہ دیکھیے نا ابھی ایک کنسالیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی جب سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائڈ. لیکن میرے جو سبمیشنز ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لا سائٹ کرنا ہے. جی کیس لا ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گیا نا. جی ہو گیا آبجیکشن ریموو ہو گیا لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں نے آپ کو انفارم کر دیا. کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے. آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ اپنی بات نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ جب الیکشن ہوا تھا جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ. جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے. اب آپ ان کے اسپوکسمن کدھر سے بن گئے وہ سر یا تو سوری ٹو سے نا پلیز بیکم اے پروفیشنل سر obtain a وکالتنامہ and file a وکالتنامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا تو ہم جناب کے سامنے ایک عرضداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا. آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا رہے. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی ان کو بلایا جائے گا وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے آپ کے سامنے. جب پھر آپ تشریف رکھیں ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بس صرف ایک ججمنٹ سے ریفر کر بنانا چاہ رہے ہیں پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر نہیں میں نہیں بنانا چاہتا. میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی please don't do this. نہیں سر جناب نے میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر 2018 CLC 1858 ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر 1358 جی سر 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر. اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں now can we go to the next case. تھینک یو. کتابیں اٹھا یہ امینہ مسعود صاحبہ جی آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. جی CP 50 ہے ان کی. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ ہماری میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں. تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے
2005 में किसकी हुकूमत थी? 2005 में परवेज मुशर्रफ की दौर में हुआ था ये। उसके बाद फिर सोमोटो के तहत ही तकरीबन ऑल पाकिस्तान से 41 पिटीशन। आपके शौहर क्या करते थे? मेरे शौहर जी बिजनेसमैन और ट्रैवल एजेंट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, उनके कॉलेजेस हैं इस्लामाबाद में। रिकवर हो गए नहीं हो गए? जी रिकवर हुए अभी नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं तो आपके पास बिजनेसमैन और ट्रैवल एजेंट को इंटरेस्ट क्या होगा स्टेट का उनको उठाने में? एलिगेशन आपका क्या है? हमारा तो यही एलिगेशन है कि जो लेटर ऑन जो लोग रिलीज होकर आए उन्होंने एविडेंस दी कि नहीं भाई, मेरे हस्बैंड के खिलाफ तो अभी तक कोई एलिगेशन नहीं। रीजन क्या था? लॉर्ड कोई रीजन नहीं है। नोबडी टोल्ड मी एवर कि कोई रीजन है। देखिए स्पेकुलेशन तो कर सकते हैं ना जी जी कि ये ज्यादा बोलता है हुकूमत के खिलाफ, इसको उठा लिया, मतलब या ये परवेज मुशर्रफ के साथ कोई उनकी दुश्मनी थी, इसको उठा लिया। कोई रीजन आपके जहन में है? लॉर्ड मेरे जहन में तो कुछ नहीं आता क्योंकि माय फादर इन लॉ इज आल्सो मिलिट्री पर्सन, इज अ कर्नल रिटायर्ड और वो उस वक्त मुशर्रफ के सीनियर भी थे। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाई यू थिंक द स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड और यू नॉट एलिजिंग इट्स द स्टेट? I think it's the state because जो भी later on 2007 में, 2006 में, 11 में, 8 में जो लोग रिहा होकर आए उन्होंने इसकी एविडेंस दी। The star witness was इमरान मुनीर। देखिए 2-3 वजह हो सकती ना। एक तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो गलत फहमी में किसी को उठा लिया, एक ही हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो फिर द मिनट दे रियलाइज यानी तो गलत उठा लिया, इसको छोड़ दो। या कोई मे बी ट्रम्प्ड अप चार्ज या जो भी उनके जहन में हो, जिसने भी ये काम किया कि जी ये ऊपर से हुक्म आया है कि इसको उठाना है, इस वजह से ये ज्यादा एक्टिविस्ट है, ये है, वो है। तो आप जो बता रही हैं कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या हो सकती है। 2001 से लेके यहाँ पे एक वॉर एंड टेरर, तो या तो आप कहें कि वो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, मुजाहिदीन को, या क्या, तो फिर तो बात समझ आती है ना। वो तो एक सोशल वर्कर भी थे, उनका एक हॉस्पिटल भी था, वो आज भी चल रहा है जो अपने। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं उठाया है, मगर मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि वजह क्या हो सकती है। देखिए जब तक इंसान को वजह ना पता चले तो फिर कल्प्रिट जो क्रिमिनल केसेस में ऐसे ही होता है ना कि भाई किसको फायदा हो रहा है, तो उस तरफ जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ठीक है, कि ये इसका कोई जातियात का झगड़ा था या कोई जमीन का तनाजा था या वो उसके खिलाफ बात करता था, तो उससे कड़ियां जुड़ती हैं। हाँ, ये पॉसिबल परपेट्रेटर्स हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि why was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, इस तरह की कोई बात नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ ने जो क्या उम्र थी जब वो he was 41। आपका ये केस कमीशन में चल रहा है, योर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन है, आपने कोई कमीशन ने 2013 में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। क्या उसका क्या ऑर्डर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया था, तो ऑब्वियसली क्योंकि है ऑर्डर आपने लगाया इसमें? नो सर, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑर्डर था बिकॉज आपने लिखा है कि अर्लियर जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए हैं, 600 प्रोडक्शन ऑर्डर कमीशन ने इशू किए थे। तो बिल्कुल, that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home किस जगह? on 30th July 2005। रावलपिंडी घर से निकले हैं और उनके दोस्त बस स्टॉप पे उनका वेट कर रहे थे। दोनों ने डेवू बस ली है टू मीट। कहाँ जा रहे थे वो? पेशावर जा रहे थे दोनों। अच्छा, क्यों? उनके एक दोस्त है अब्दुल गनी, उनके साथ मिलने के लिए। तो जब उनसे भी राब्ता किया गया, अब्दुल गनी भाई से भी, तो उन्होंने भी कहा कि वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। आप
किसको सस्पेक्ट करती हैं? एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ हमारी एजेंसीज भी हैं, तो आप किसको सस्पेक्ट करती है? मतलब लास्ट आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जो एविडेंसेस हमें मिले थे जो कि रिलीज पर्सन्स की तरफ से थे, तो उन्होंने तो यही बताया था कि वो आईएसआई की कस्टडी में थे। उन्होंने देखा था जी, और वो ईद के दिन थे, पर्सन्स उनको जानते थे? जानते नहीं थे, मगर उन्होंने फिर भी उनका नाम पूछा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उनके लॉयर ने मुझे बताया कि इस तरह से इमरान मुनीर ने मसूद जंजुआ को देखा है, और उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें सामने आई। इस बात को कितना अरसा गुजरे? इसको 2007 में ये हुआ था, और उस वक्त 2005 से लेके 2018 तक तकरीबन मैंने 749 CMs डाली हैं HRC 965 में, और जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड से पर्टेनिंग नहीं थी। फिर एक जब ये JIT बनाते हैं ना, तो JIT में आपने कभी अपीयर हुई हैं, पार्टिसिपेट किया JIT में? सर सब कुछ हुआ था, मगर JIT में ISI के और IB के सारे मेंबरान होते हैं ना, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है उसमें, SSP लेवल पे या DIG लेवल पे, तो 8-10 लोगों की जो JIT बनती है, कभी आप पेश हुई हैं JIT में? बेशुमार दफा पेश हुई हूँ, रावलपिंडी में, CPO के ऑफिस में, कमीशन के अंदर, और हर चीज़। सर उस वक्त ये होता था कि तमाम केसेस जो कमीशन में चल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि जब वहाँ से डिस्पोज हुआ तो यहाँ से आपने अभी कहा कि खुदा न खास्ता वो डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो क्या रीजंस थी उसकी? उनका तो यही कहा है कि वो वज़ीरिस्तान में उनको जो है तालिबान ने और इस तरह एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने मार दिया। बट ये कि उस वक्त के जो जजेस थे, जिस तरह जवाद ख्वाजा साहब क्या गए थे बलूचिस्तान? नहीं, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस नहीं दे पाए थे, ना वो ये कह पाए थे कि कहाँ पर उनकी कब्र है। What do you want us to do? My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. करें क्या, बताएं ना। जो उनकी क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो कमीशन में तो वो सारे केस डिस्पोज ऑफ हो गए थे 2018 में। बताइए ना, कमीशन को छोड़ दीजिए ना, अब आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक 2-3 बातें ना। एक तो ये आपने इस मौजूदा हुकूमत या इस मौजूदा हुकूमत के जितने भी अहम एहलकार हैं उनके खिलाफ तो एलिगेशन है नहीं। अब आपका एलिगेशन है कि 2005 में उनको गायब हुए, वो 30 जुलाई 2005। 30 जुलाई 2005, तो इस बात को कितने साल हो गए? 15, 25 तो कितने साल हुए? 18 साल। जी सर। हाँ 18 years हो गए। 18 साल। उस वक्त 40 years एज थी उनकी। अब 18 years हम कोई ऐसी चीज बताएं जो कि कुछ हम मदद आपकी कर सकें, मगर कोई क्या हम कैसे कर सकें? कोई या तो देखिए, आप कभी होता है ना कि जी कोई तंजीम से वाबस्तगी थी, ये कोई गलत बात तो नहीं, तंजीम इंसान ज्वाइन कर सकता है, फंडामेंटल राइट, अनलेस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और बिना पे जी हुआ हो तो कहीं शक जाता है ना इस तरफ या उस तरफ, या फिर वो गलत फहमी में उठा लिया हो या फिर छूट जाते हैं आमतौर पे लोग। हो सकती है, क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ टॉप ऑफिशियल से मिलते थे, माय फादर इन लॉ, आपने कहा आपका तो कनेक्शन भी है आर्मी से। जी, फादर इन लॉ वाज, क्या कनेक्शन है आर्मी से? माय फादर इन लॉ इज अ कर्नल रिटायर्ड। Actually he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter he met the president. क्या मिला उनको, क्या परवेज मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ISI के जो DGs थे इनसे मुलाकात, उनको मिला, बताया क्या तो किया? उन्होंने ये गलत आदमी है, हमने इसको उठाया हुआ है या नहीं? हमारे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा उनको मिली कि हम अभी हैव नो इंटरेस्ट इन योर सन, वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपके बेटे को क्यों पिक करेंगे? फिर जी ये तो फिर हम क्या करें, कुछ आप बताइए ना कि जब वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है, हमने ये केसेस उठाए बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस, ठीक है, बट एंड दिस मस्ट स्टॉप. Exactly. And there used to be much more missing persons, and I think अब शायद नहीं हो रहा है जो पहले होता था. I don't know, I may be wrong. मगर I've been Chief Justice Balochistan as well, so but तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो हम कर सकते हैं. आप क्या, हम हुकूमत से पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्ली कोई
मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से। अगर सेकंड बिल्कुल मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह आप से बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम through करेंगे। quite a lot of torture over these years Okay, you have a lot because of experience. you know You have more experience than us. exactly तो अब आप बताएं what shall we do for you? my lord for my case agar if for my husband's case if you can अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की आप बात बताएं ना, कर वो आप हम सके पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। दोबारा भी जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट मैं करते just हैं I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए, अगर वो दाना but फास्ता किससे हम पूछें, उनकी किससे हम डेथ हो पूछें? गई है ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में किससे हम मिलिट्री पूछें? से ही पूछना पड़ेगा क्योंकि मिलिट्री से ऑफ कोर्स मिलिट्री से अच्छा। जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले जिनका गए। आपने नाम लिया तो उस जमाने में तो शायद वो मेजर या भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, जी, बिल्कुल। so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan and they can, if they have some Please, sir. information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about नहीं हम उन पे भी आते हैं ना, पहले we are पहले concerned आपका about पर्सनल one. कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है। Can we have a report if there is some information My lord, I have taken down the details. and if whatever has happened, all she says is if I can know the truth of the matter. yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. ठीक है, there's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass a order, My lord. but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा एजी साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं JIT में क्या है वो देखें, वो JIT collectively देखते हैं, इनको कम से कम जवाब दे देंगे वो कि एक भाई खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं Exactly, होगा। उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा. It will Because be she's gone going through the same process. pain. Yeah. Now, if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there is, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. my lord. ठीक है? My lord, तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront not only for her own husband but for others also. इसलिए मैं बोल रहा हूँ appreciate that. कि जिसमें ऐसा वगैरह के लोग होते हैं वो अभी बता देंगे, तो हमारे समाज वालों से जो कभी चाहिए जा जाएगा। ठीक है? My lord. तो the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. ठीक है? These are or any other It's Ministry of Interior essentially. and or the Ministry of Prime Defence, Minister's office. जी. because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. but, Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, she just- and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through forever and ever. My lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Yes. Musharraf at that time. Yes. And then He said that we have no interest in and he him. said, all right. So she said so. You've heard it correctly. So Still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on A behalf lot of these time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, Bilkul. if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I have noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप.
माय लॉर्ड, ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं, जी जी, ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, BTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है नहीं? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने ने. जी बताइए. जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है. नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं. हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं. जी जी, ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए. हाँ जी, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए. जो बात है वो एक अलग इशू है. हमारा जो jurisdiction है वो habeas corpus की jurisdiction है. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से. नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना. अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं और तकरीबन 18 में से 15 साल में यहीं पर पेश होती रही हूँ. और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना. जी, कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में. ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना. तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं. दो बातें हो गई. देखिए, इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें. हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं. एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जी. एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म. बिल्कुल बिल्कुल. एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं. तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें. बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट तो की पॉलिसी तो नहीं बनी. आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई ये पॉलिसी रोक दी जाए कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर हमारे पास सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with if you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law, and no, but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan.
So there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. You know, people are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کے اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی 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 دیکھیے یہ ذہنیت جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. بھائی کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. I think the state Some needs to be definite inclusive. statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا, یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر, ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. 11. So he should be now, what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے, کمیشن سے آئے ہیں, رجسٹرار ہیں آپ کمیشن تو آپ سامنے آئیے. یہ کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ, شریف ورک صاحب, محمد شریف ورک. محمد شریف ورک یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. جی یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر ہاں تنخواہ ملتی ہے سر, تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. اتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ خیر میں اندازہ نہیں ہوتا سے بتا ہوگا سیکٹری کو, مجھے پتہ نہیں, میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس یہ سر تنخواہیں لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام بھی کر رہا ہے؟ نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن والا, پتہ ہے نا. کراچی میں ہمارے جسٹس آپ کی اینول رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں, منتھلی کرتے ہیں, کوارٹرلی کرتے ہیں, منتھلی بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج ہماری تک؟ تو بڑی ماشاءاللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی, وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا ہے. پھر نہیں کتنی ریکوری منتھلی کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا میں ابھی آپ پرسنس کا؟ یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹسٹ نہیں, ویسے ہی بتا دیجیے نا, مہینے میں کتنے ریکور کرا, کتنی دفعہ میٹنگ اسمبلی بتا دیتا ہوں. نہیں بات سنیں, آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر. کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے, سارے سب ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. ریکوری کتنی ہوتی ہے مہینے میں, کیا ایوریج ہے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں سر, اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے, یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے 2 مختلف لفظ ہیں. سر کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ سر ٹریسڈ کہہ لیں. ٹریسڈ آپ کی رپورٹ کدھر ہے؟ یہ ہے نا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, دکھائیے کیا چیز ہے. 91 دیکھ لیں, وہ سارا
या मैं जो इनके मुताबिक ये देखते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर वो बाकी है ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में, ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना बता दीजिए ना। जी ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? सर मैं मुख्तलिफ किस्म आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें, जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाना केस में कस्टडी में है। असल में सर ये चार तो ये शायद ये इसका मतलब ये है। इसमें नहीं है ना जो अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पता जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ, G91। ये क्या घर है? नहीं सर ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर, अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर फ्रेश? जी फ्रेश। अच्छा, इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिए ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT क्या चीज है? सर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. Not at all. कोई मुतमईन नहीं है सर। Dispose of किए हैं। Honorable ने बड़ा। नहीं, एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? Dispose of जो है इसमें। हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। Satisfied, sir. एक सेकेंड, इत्तेदाद साहब आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? नहीं, बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन? नहीं मुतमईन, बस ओके। अच्छा, एक रईस, ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर। नहीं, कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो हमारे पास। मेरा सवाल सुने। 2011 से सर। देखिए आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ रहे हैं ना, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? ऐसी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट। आपको ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है। आप यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके? नहीं सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे हुए। ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन ज़ई साहब और जावेद इकबाल साहब, और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उसी इनका केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते हैं। और रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जय साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और फ्रंटियर। यही मेंबर हैं फिर? जी 5 लोग हैं, 4 लोग हैं जी। हाँ 4 हो गए जी, बिल्कुल। Are they paid or are they voluntary work?
ये सब पे होते हैं सर, पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही, पेंशन तो लेते हैं ना सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह है, यही है। उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा ऐसा क्यों कर क्या जवाब? नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ जी, ये अटॉर्नी जनरल साहब से उनका पैकेज तो वही होता है ना जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up. The presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए। I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, it is whether quite post-retirement can they, if they are required to do any दोनों work. वो आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। कोई भी रिटायर होता है जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं। हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन। Right. So I was not. No, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, That's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But it's a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर। नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज कमिश्नर इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट अलग बात होती है और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किस में, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा। अभी हमारी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने। आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी। विजिट भी किया है वो, आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी। बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा। कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में, मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे, अच्छा, ये आसन की पिटीशन मैंने दायर की है, अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अच्छा, वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा। आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट क्या है, रजिस्ट्रार बनाया हुआ। ये कौन से केसेस जो क्लोज हुए हैं रजिस्ट्रार साहब? क्या आपको ये अपॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी जी, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 and 2011. Never. जी, वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार, आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी। वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 134 of which file? ये है। My lord, I have this copy of the नोटिफिकेशन notification. हमारे पास है। कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का। दे दो दोनों। 161 देना, मुझे देना जरा। उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है। My lord, मेरी ये जो जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011 dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3
3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP, retired, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, member. 2. ये पेमेंट की किधर है बात, बजट और ये? The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कमीशन, प्लस कर दिया है to trace whereabouts 30 into, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे. अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's, I mean, there's only this Commission will have it its says that independent huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए. I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट करे, वो बढ़ा देते हैं. Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में. नहीं, tell us. आप हमें बताएं जरा, ज़बानी बताएं. Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that, that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी जी. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Achha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप index ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि individual cases के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या recommendation हुई, उस पे क्या compensation award हुई, वो इस report में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. ये report confidential थी, ये public कब हुई है? Sir, ये फिर public तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी report में लिख रहे हैं कि confidential report है. The copies, sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जीआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. द मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue.
Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant पढ़े? जी. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a three-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में, sir. Production orders were issued by the commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. Sir, this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission, without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी। अब 2024 में इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड टू द रेलेवेंट एजेंसीज, ओनली 51 हैव बीन कंप्लाइड विद. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जरा पेज 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing, that's the problem with the commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस. ये सर वो भी मैं आपको दिखाता हूं. इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ ये पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टैटिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए, तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है, मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं. मैंने पूरी
report लगाई. we read it. Page 66 अगर देख लीजिए. पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक सेकंड, one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. have a look at the production order. जी सर. मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ. सैंपल के तौर पे मैंने रखा है. My lord. हाँ तो वो तो वही कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है. ये सही बात है. तो इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट कर रही है. If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And नहीं, वो तो ठीक है ना. those powers were ever Object is exercised. not to send people to jail. No, but The what I'm object saying is to, if the people are illegally detained, to set them free. जी. वो तो बात की बातें हैं. Well, I'm just. आप punishment में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम punishment में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the Commission what happened. I mean, check this is 2020, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law, I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so we can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने है, 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord the Chief Justice, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट. आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें. जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा. हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उसी पे अटके हुए. नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ इसमें. कौन सा है? ये पेज 29. अब नंबर, अच्छा नील, नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20 हाँ मिल गया जी. उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन बने. मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है.
ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, the petitioner therefore urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. देखिए, Ijaz साहब, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं. साहब, मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है, ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर. विद रिस्पेक्ट, therefore I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके. आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे. फिर आपका एतराज यही होगा कि जी, क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है. तो वो नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है. तो ये जरूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियां आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले. ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम. सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ, बस यही काम करो. सर, इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम. आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें. एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को. जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने ने अपॉइंट किया था उनको. जी सर, मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया, तो अब आपकी हुकूमत है, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में. मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर में जी. अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार, सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है. कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहता है यार ये क्या मुझे काम करना है मुफ्त में,
ٹھیک ہے, تو وہ بھی دیکھیں ہم یہ برڈن اب پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بلوچستان, اب یہ اگر یہ باڈی میٹ ہی نہیں کرے گی, کبھی کام ہی نہیں کرے گی, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہونا چاہیے جو کہ اگر کام کرے آپ اسمبلی نہیں کر سکیں گے, اتنے سارے ممبرز پورے پھر وہ پاکستان کل کو کہے گا جی میں تو ریٹائر ہو گیا. وہ ایک ٹرم کا ٹرم ہوتا ہے, ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, تو الیکشنئرنگ میں لگ جاتے ہیں, پھر وہ کیسز بھی ہمارے سامنے نہیں کبھی چلاتے ہیں کہ جی اب الیکشن ہو رہا ہے آپ میرا کیس ارجن کر دیں. تو یہ اس میں ذرا سا ہم دیکھیں اعتزاز صاحب, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. The commission appoint ہوئی ہے. دیکھیے وہ دو قسم کے کمیشن ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت, وہ پاور ان کا ہے, وہ گورنمنٹ کا ہے, ہمارا پاور ہے, گورنمنٹ کا, ایک آپ کا پاور ہے, آپ کی پاور کو ایکسرسائز کریں. اور میں اس میں ذرا ایک چیز جو میں نے سول سوسائٹی کے موسٹ پرومیننٹ اینڈ موسٹ افیکٹو بندے نامینیٹ کرنے کو کہا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, دی پاکستان بار کاؤنسل, presidents of the 4 provinces. Why? Sir, they are, abhi ye baki dekh, the mix, give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will, اور ہمارے بار ایسوسیشن میں ہر سال الیکشن ہو جاتا ہے, تو نیا بندہ آئے گا کوئی ہمارا نیا مینڈیٹ لے کے, یہ ایک روسٹر آف دی بار الیکشنز کمپٹیشن میں ہو جائے گا. وہ آنے دینا, ان کے کمنٹس آتے ہیں, اگر سول سوسائٹی کو وہ ایڈ کرنا وہ تو ان کا کام ہے نامینیٹ کرنا اور اس کو نوٹیفائی کرنا نا. جی سر, چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن, ٹھیک ہے, چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن, چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن. آپ یہ دو دیکھیں, ڈائریکٹر جنرل Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. جو scheduled at 3 o'clock. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. We don't want to, we are taking this case seriously. یہ ہم اس کو کل فل کورٹ تو نہیں, وہ بینچ تو نہیں, 11 بجے لارجر بینچ ہے. پی ایف یو جے کو بھی میں نے اس میں, پی ایف یو جے اینڈ 2 سینئر آفیسرز, سینئر موسٹ آفیسرز آف دی انٹر سروسز انٹیلیجنس اینڈ دی آئی بی. وہ تو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کریں نا, کمیشن, وہ لیٹ دی اٹارنی جنرل ٹیک سم انسٹرکشنز اینڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نوٹیفائی کریں. اٹارنی جنرل آپ ایسا کریں, آج we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday ko hum ne bhi koi rakha na case, kya rakha tha? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. Salahuddin, hold, thoda sa ruk jaiye. Monday ko kuch aur hai? There is presidential reference on Monday. Tuesday ko kya? Yes. بینچ کنٹینیو کر دی تو ٹیوزڈے کو کر لیں. اس سے بھی نہیں پتا اگر ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہاں جا رہے ہو, چھوڑنا چاہتے ہو؟ کمال. اچھا آپ ایسا کریں, کم اپ وتھ سم پریکٹیکل سجیشنز, ٹاک ٹو مسٹر فیصل صدیقی, ٹیک دیز پروڈکشن آرڈرز. بلکہ ہم آرڈر ڈکٹیٹ ہی کر دیتے ہیں, لکھیں. سوری صلاح صاحب, آپ اس کیس میں. Sir, I'm in CPLA 1503 and 1504. I'm appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. جی صلاح الدین صاحب ہم نے withdraw کر لی. These appeals have been withdrawn. اچھا یہ بتائیے, وہ جو کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس نے کیا کام کیا؟
वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी. नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी report एक furnish की है sir. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा. The report was furnished and it is on इसमें record. लिखिए वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे ठीक है. ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं. इत्तेजाज हसन फेडरल आपकी एक है 161 है और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124. सबसे पहला केस तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं. अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की. इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है. ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना दे, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में. ये आते हैं, बताइए. तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे and we want you to, we will direct this commission to provide you with the information and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My Lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. So over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, आपकी भी 3 है ना, 1 2 3. जी मालूम, ये विड्रॉ कर दो. 4. जी मालूम, विड्रॉ कर ले. नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से. जी my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So these petitions have become CPLA infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333. नहीं, वो उन 3 का लिखें 2022. CPLA 4333 2021. पहले वो वाला लिख दें 2021 का. Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है, आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें. MRS. ओके, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें. States that her husband, Mr. Masood Janjua,
was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that My lord, it's on and that the- she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है उसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? नोटिफिकेशन पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 130. वो तो लॉ है. हाँ ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E, capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the commission. Full stop. Others present, the commission comprises of, we are informed that the commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा. ठीक है, उसके ब्रैकेट में कमीशन. मिस्टर खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itizaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itizaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना देखो गाड़ी कर देंगे ना सुन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे अभी नंबर करके उसको लाओ उसी पर रखें नंबर करेंगे तो फिर इंडिविजुअलिटी का इशू है ना आप उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना जैसे तुम्हारा तो पर्सनल इशू है मिस्टेक बनेगा उसको दिन सुन लेंगे पर्सनल मेंटेनेबिलिटी नहीं होगा देख लो. अच्छा ठीक है तो अच्छा फुल स्टॉप. The secretary of the commission
Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same office objection was also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे, missing/enforced, नहीं वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से, हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड. That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases, they set and establish a pattern. And that pattern is the one that your lordship has to address. It's similar fact evidence. I know, I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे, लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे. अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे. तो फोकस हम यही रखेंगे. अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे हैं, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे. मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है जी सर, तो आप करिए अर्ज. जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे दो जुमले तो अर्ज कर लें. चले करिए. मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है, ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन. ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है. दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फरक हबीब था या कोई. इट इज द न्यू मोड ऑफ On what basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जांपल Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am then here. On what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए. सर 4 लोगों के नहीं है ये. 4 लोगों के आपने नाम लिखे. 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं अभी आके पढ़ लें. आगम और भट्टी 2 तो यही है. Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given the statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the दूसरे केस में हमने किया है. नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है. नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे. वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला. इसमें तो नहीं किया. My lord, it was in this case. Huh? It was in this case.
इसी में ही था नहीं वो वाला केस वो जो कंटेम्प्ट वाला था नहीं इसी में नोटिस हो गया ना वो हाँ इसी में था इसी बलोच मिसिंग पर्सन लॉन्ग डे बट वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग पर्सन आई नो चले हम ये बात भी देखते हैं अच्छा वो और क्या रह गया था द कमीशन इज डायरेक्टेड टू सबमिट comprehensive report should and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है फिर हम बाकी चीजें बाद में कर लेंगे कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने कुछ बातें रह गई हैं तो हम इसको बताएं कितना टाइम दें आपको क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंजाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी फिर आप क्या करना चाहते हैं तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें तो अब एक इनसे पूछते हैं दूसरी बात एक हमने जो नोटिस ली थी मगर इन्होंने कहा था मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न विद दैट सॉरी बुरा ना माने शोएब साहिन साहब हमने कहा था जी यहाँ से जो लोगों को उठाया गया था उन्होंने कहा मैं ला रहा हूँ पिटिशन मैं अमेंड कर रहा हूँ इसको उन्होंने ना लाए पिटिशन और ना अमेंड किए अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उनका बुनियादी हकूक है अगर वो कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं वो एक अलग बात होती है ये नहीं कि उनको धक्के मार से डंडे मार से उनको उठाया जाए नहीं उनको बहुत रुस्वा कर रहे हैं ये बहुत रुस्वा किया है एक सेकंड सर आपने तो नहीं लिया है ना इन्होंने वादा किया था वो करेंगे नहीं किया उन्होंने पूरा वादा हम अब अपने तौर पे कर रहे हैं वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. ठीक है that's the fundamental right we may just add things in the thing so now we have to go to the commission now we just propose a date how much time do you want no my lord if and if you can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case of course of course Mr. Faisal Siddiqui Always you are already appearing for someone or not? No. I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. ये बलोच जो यहाँ आए हुए हैं ना जी जस्ट मैंने विजिट किया सर इट इज अ पैथेटिक स्टेट ऑफ तकरीर ना करें कागज का टुकड़ा लाइए फाइल कीजिए पिटिशन वो मिस्टर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case whenever this case is fixed his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan travel and staying costs that's all no fees अच्छा इसमें ये डेट कौन सी दे रहे हैं ये बताइए अटॉर्नी जनरल व्हाट विल बी अ रीजनेबल टाइम माय लॉर्ड इफ द कमीशन कैन गिव ये आपको देंगे कितने दिन में आप दे सकते हैं पहले बताएं इनको ये पूछ लेते हैं इनसे खालिद साहब आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं ताकि खालिद साहब कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं कुछ आइडिया दे रहे टाइम दे दें 2-3 भाई आपको कितने दिन में इनको कम से कम 3 हफ्ते दे दें क्योंकि हमारा स्टाफ है नहीं बात कर रहे हैं यार एक रिपोर्ट भी नहीं है हमारे पास ना नहीं नहीं 2-3 हफ्ते में क्या है जल्दी काम है 8-10 दिन में कर ले 8-10 दिन मैक्सिमम कितने सर कितना टाइम 10 days 10 to 15 days देते फिर सर 10 to 15 within 10 days ठीक सर ये 10 days में आपको देंगे फिर आप कितना टाइम लेंगे तो if they can share production orders in let's say within 10 days share production orders जल्दी शेयर कर ले रिपोर्ट इन्होंने 10 दिन में देनी है प्रोडक्शन ऑर्डर्स 2 दिन में आ जाएंगे आप हमें the case can be listed let's say after 2 weeks 10 days के बाद 2 weeks no 2 weeks from now ठीक है फिर हम डेट तक लिख लेंगे अपना जरा देख लेंगे कोई प्रोडक्शन ऑर्डर्स मैं इनसे ले लूंगा 2 हफ्ते में preferably Mr. Faisal Siddiqui if your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders
must be on each of the cases. Yes, ये yes. कोई general report No, ना we don't want numbers. ये हमें आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना. सर एक गुजारिश और है सिर्फ जी. वो ये है वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट तो वो कहते थे मंडे ना ट्यूसडे का. उनसे पूछते थे ये जब जज साहबान कि व्हाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले पर संडे खराब हो जाएगा तो ट्यूसडे. ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं. एक एग्जांपल देते हैं. नहीं अगर नहीं चला तो आपकी एडजमेंट की दरखास्त आई हुई होगी. हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं. अब आप देख लें 3:30 बजे हैं, ठीक है. अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, Very grateful. वो 3 बजे रखी हुई है. अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल. वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल, she is seriously unwell and she's come and sat in court. मतलब बलोच प्रोटेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी. बलोच प्रोटेस्ट के बारे में मतलब सिर्फ एक बलोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी. उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें. आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है. so far a response